Hello everyone, welcome to today's class. Now in this session, we'll be learning few more journal entries. We'll be learning how to pass the journal entry of business transactions by applying the rule of debit and credit according to traditional approach and according to modern approach. So the first transaction for the day is paid cash to Suresh. Now, first step, we'll have to identify which accounts are involved in this transaction. The first account involved is your cash account. Cash account, if we classify it according to the traditional approach, it's a real account. When we paid cash to Suresh in this business transaction, cash is going out. So we'll apply the rule of the real account. Credit what goes out as cash is going out from the business. So cash account will be credited in this transaction. This will result into decrease in cash. And if we classify cash account according to modern approach, it will be an asset account. Fine. The second account which is involved in this transaction is that of Suresh. Suresh is our creditor, है ना, क्योंकि हमने अगर पे किया है तो क्रेडिटर को ही पे किया होगा, हमने किसी को देना था, तो सुरेश इज अवर क्रेडिटर. सेकेंड स्टेप, अगर हम इसको क्लासीफाई करें ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली, सो सुरेश अकाउंट विल बी अवर नेचुरल पर्सनल अकाउंट एंड सुरेश इज द रिसीवर ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस. सुरेश ने बिजनेस से कैश रिसीव किया है, सो वील अप्लाई द रूल ऑफ द पर्सनल अकाउंट, debit the receiver. Now when Suresh has received cash from the business, so Suresh का account हमारे books of account में as a creditor decrease हो जाएगा, क्योंकि जो amount हमने सुरेश को देनी थी वो हमने दे दी. So that will result into decrease in creditors account, and creditor account according to modern approach is a liability account. Creditor account according to modern approach is a liability account. So you can see that in asset, credit means decrease, and in liability, debit means decrease. The rule is in asset, modern approach में debit credit का rule क्या हुआ? Modern approach के accordingly asset में credit का मतलब decrease होता है और liability में debit का मतलब decrease होता है. So the entry which we are going to pass here will be सुरेश का अकाउंट हम डेबिट करेंगे और कैश का अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे. सो द एंट्री विल बी सुरेश डेबिटेड टू कैश अकाउंट. नेक्स्ट एंट्री, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश. अब हमने महेश से कैश रिसीव किया है, तो इसका मतलब महेश मेरा डेटर होगा, तभी उसने कैश पे किया है. सो when we received cash from Mahesh, first step we will identify which accounts are involved in this transaction. First is your cash account, another will be your Mahesh, the debtor account. So first account, cash account. We'll classify cash account according to the traditional approach. Cash account will be real account. We'll apply the rule of debit and credit according to traditional approach in case of real account. Debit what comes in, credit what goes out. Fine. So since we have received the cash, इसका मतलब cash business में आ रहा है, so we'll apply the rule debit what comes in as cash is coming inside the business. So जब cash business में आ रहा है बेटा, तो cash business में increase हो जाएगा. So this transaction is going to result into increase in cash. And then finally, the last step, if I want to classify this cash account according to modern approach, it is a asset account. The second account involved in this transaction is that of Mahesh. Mahesh is our debtor. It's a personal account, and Mahesh is the giver of cash to the business. So we'll apply the rule of personal account. The rule is credit the giver.
एंड बाय दिस ट्रांजेक्शन महेश जो हमारा डेटर है वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में डिक्रीज हो जाएगा. रीजन बीइंग, अगर उसने कैश पे कर दिया तो महेश का जो अकाउंट है मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में वो अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी. एंड डेटर अकॉर्डिंग टू द modern approach is an asset account. Fine. So let's learn the rule according to modern approach. So according to modern approach, asset में debit means increase and asset में credit means decrease. Asset में debit का मतलब increase होता है और asset में credit का मतलब decrease होता है. और अगर मुझे इसकी जर्नल एंट्री बनानी है तो वन एसेट अकाउंट कैश अकाउंट इज डेबिटेड, अनदर एसेट अकाउंट महेश is credited. So my entry will be cash account debited to Mahesh. Next entry, next transaction is purchase goods from Ravi for cash. अब आप खुद देखिए यहाँ पर हमने गुड्स जो परचेज किए हैं रवि से, ये कैश बेसिस पे किए हैं तो ये मेरी कैश परचेजेस मानी जाएगी. रवि जो नाम दे रखा है ऑफ द वेंडर जिससे हमने गुड्स परचेज किए हैं, दैट इज जस्ट गिवन टू कंफ्यूज यू. जब फॉर कैश लिख दिया तो ये कैश परचेजेस ही मानी जाएंगी. सो द टू अकाउंट्स विच आर इन्वॉल्व here will be, first is purchases account. जब हम goods purchase करते हैं तो हम purchases account को open करते हैं. Fine. And another will be definitely it is for cash. तो दूसरा account हमारा cash account होगा. Now purchases account, if we classify according purchase account according to traditional approach, it is a nominal account. क्यों? क्योंकि purchase of goods is treated like purchase of your raw material or goods which are traded in our business. So that we are going to assume that they are being purchased and consumed during the year. So it's a nominal account. They are our expenses. We'll apply the rule. Debit all expenses and losses. Goods purchased will be treated as revenue expenditure, expenses as they are purchased and consumed during the year. Now, this transaction is going to increase our expense. Fine. So it is going to increase our purchase. And then finally, we are going to see that purchases account according to modern approach, it is classified as an expense account. Then second account is your cash account. Cash account classified according to traditional approach is by real account. Now when we have purchased the goods for cash, that means we have made cash payment. So that means cash is going out of the business. So we'll apply the rule, credit what goes out as cash is going out from the business. Then this transaction is going to result into decrease in cash, and cash account according to your modern approach is going to be an asset account. So the we can see, we can apply this rule of debit and credit according to your modern approach, that in expense account debit means increase and in asset account credit means decrease. Fine. And finally, when we will pass the journal entry, the entry would be purchases account debited to cash account. Next transaction, sold goods to Sanya for cash. Again, this word Sanya is here, given here just to confuse you. हम इस सेल को कैश सेल ही मानेंगे, कैश बेसिस पे ही गुड्स की सेल हुई है. सानिया वर्ड इज जस्ट गिवन जस्ट टू कंफ्यूज यू कि मे बी स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है कि वर्ड अगर सानिया दिया हुआ है तो ये सानिया मेरी डेटर हो जाएगी और ये क्रेडिट सेल होगी. नहीं, जब जिस पर्सन को हमने गुड्स सेल किए हैं अगर उसका नाम दिया है, मीन्स डेटर का नाम दिया हुआ है, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन में लिखा है फॉर कैश तो डेफिनेटली फॉर कैश मीन्स दैट इट्स अ कैश सेल. So if it's a cash sale, so the two accounts which are involved in this transaction are first sales account
and second is it's for cash, so cash account. So sales account according to traditional approach is a nominal account, as it is going to be classified as your income. So by sales your income gets increased, so we'll apply the rule credit all incomes and gains. Goods sold will be treated as revenue receipts or income. It will result into increase in your income. Sale is going to increase your income, and according to modern approach, sale account will be classified as an income account. The second account, cash account. Cash account classified according to traditional approach, real account. Apply the rule, debit what comes in as cash is coming inside the business. Then it will increase, this transaction will increase the cash, and then if we classify classify cash account according to modern approach, it's an asset account. So the let's learn the rule for debit and credit according to modern approach. In income, credit means increase, income account में credit means increase, and asset account में बेटा debit means increase. Fine. And if I want to pass the journal entry, मेरा कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सो माय एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, withdrew cash from office for personal use. Now the proprietor has withdrew cash from the office for personal use. That means that's a drawing of your owner, of your proprietor. Now which two accounts will be involved? So if we see that, the proprietor is withdrawing this amount for his personal use, so the first account will be your cash account and another account will be your drawing account. So first step, cash account is involved, and when cash is being withdrawn by the proprietor for the personal use, that means cash is going out of your business. So second step, classify cash account according to your traditional approach, that will be a real account. We'll apply the rule credit what goes out as cash is going out from the business. This will result into decrease in cash in the business, and then cash account is an asset account according to your modern approach. Now the second account involved will be your drawings account, है ना. प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए ऑफिस से अगर अमाउंट विड्रॉ करी है तो उसको हम ड्रॉइंग्स कहेंगे. सो ड्रॉइंग्स account is a reduction from the capital. This is drawings are the amount which is going to reduce the capital, and we know that drawing or capital, it's a personal account according to your traditional approach, and proprietor in this case is the receiver of cash from the business. So we'll apply the rule debit the receiver, and this transaction is going to increase the drawings. हमारी जो drawings होंगी वो increase हो जाएंगी, और drawings को अगर हम modern approach के accordingly classify करते हैं, so that is your decrease in capital. Fine, that is decrease in capital. So you can see that according to the modern approach, the rules for debit and credit, for asset account, credit means decrease. So in this transaction, cash account will be credited, and in your liability, see, your capital, if it is decreasing, fine, decrease in capital means that we are going to debit it. We are going to debit the your drawings account. So my entry will be drawings account debited to cash. My entry will be drawings account debited to. Next transaction is paid rent. अगर मुझे दिया हो पेड रेंट या पेड रेंट टू गोपाल, जिसको मैंने रेंट पे किया है उसका नाम भी दिया हो, फाइन. सो इन बोथ द केसेस अगेन the rule for passing the entry will be same. See, paid rent or paid rent to Gopal, entry would be same. अगर पेड रेंट टू गोपाल दिया है तो बेटा गोपाल का नाम सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में एक्चुअली हुआ क्या है कि आपने
रेंट एज एन एक्सपेंस गोपाल जो कि लैंडलॉर्ड है उसको पे किया है। तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में तो दो ही अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। फर्स्ट इज योर कैश अकाउंट, क्योंकि आपने जब रेंट पे किया तो वो रेंट कैश में पे किया होगा, अगेन कैश इज गोइंग आउट ऑफ योर बिजनेस। और दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा इज गोइंग टू बी योर रेंट अकाउंट, नॉट गोपाल। ये आप ध्यान दीजिएगा कि अगर लिखा हो पेड रेंट टू गोपाल तो हमने गोपाल को रेंट पे किया है, तो गोपाल का अकाउंट नहीं है, हमने रेंट पे किया है। रेंट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, सो रेंट अकाउंट विल बी ओपन। सो फर्स्ट अकाउंट कैश अकाउंट, it's a real account. Applying the rule, credit what goes out as cash is going out from the business when we are paying rent. This will result into decrease in cash, and cash account is an asset account. Second account involved is your rent account. Rent, according to your traditional approach, is a nominal account. It's an expense account, so applying the rule, debit all expenses and losses. Now, expenses in the business are increasing, then increase in expense, हमारा rent increase हो गया, and then finally if I want to classify rent account according to your modern approach, it is going to be my expense account. Now you can see the rule of debit and credit according to modern approach. Asset में credit means decrease, and in expense debit means increase. So my journal entry will be rent account debited to cash account. Let's proceed towards the next transaction. It's received commission. अब हमने commission receive करी है. Now commission received, obviously हमने कमीशन जो रिसीव की होगी वो कैश में रिसीव करी होगी, और कमीशन मेरी बिजनेस में अगर ये रिसीव की है इट विल बी ट्रीटेड एज एन इनकम. सो फर्स्ट अकाउंट विल बी कैश अकाउंट which is involved in this transaction. कमीशन रिसीव किए इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो कैश बिजनेस में इंक्रीज हो जाएगा, कैश इज कमिंग इनसाइड द बिजनेस, सो कैश विल बी अ रियल अकाउंट. Rule applied is debit what comes in as cash is coming inside the business. Cash is being increased in the business because जब आप commission in the form of cash receive कर रहे हो तो cash आपका business में बढ़ जाएगा, and then it is an asset account according to modern approach. The second account involved is your commission account. Commission is your nominal account. Why nominal account? Because it's an income. अगर आपने कमीशन रिसीव की है बिजनेस ने तो इसका मतलब मेरी इनकम के फॉर्म में कमीशन आई है. देन अप्लाई द रूल of the nominal account, credit all incomes and gains as cash as commission received is the income. This transaction is going to increase in income, and according to modern approach commission account is an income account. Again the rule of debit and credit according to the modern approach. According to modern approach asset account में बेटा डेबिट का मतलब इंक्रीज होता है, और क्रेडिट इनकम अकाउंट में क्रेडिट का मतलब इंक्रीज होता है. फाइन. तो अगर मैं ट्रांजैक्शन बनाऊं जर्नल एंट्री, मेरा कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सो माय जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट. नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, paid cash to Mahesh rupees 9,600 and discount received from him is rupees 400. अब बेटा इस ट्रांजैक्शन में आप देखो, हमने ना महेश को अगर कैश पे किया है तो महेश मेरा क्रेडिटर होगा. फाइन. 9,600 का कैश पे किया है, मे बी मैंने प्रॉम्प्ट टाइमली कैश पे कर दिया हो या प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दी हो, तो मैंने महेश को जब कैश पे किया तो महेश ने 400 का डिस्काउंट मेरे बिजनेस को दिया. सो 400 इज द डिस्काउंट रिसीव्ड. Now in this transaction, now see how many accounts are involved. First is your cash account. हमने कैश पे किया महेश को, है ना. सो कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट. जब हमने पे किया कैश को तो कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, सो अप्लाई द रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट एज कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस.
this will result into decrease in cash, and if we classify it cash according to modern approach, this will be an asset account. Now the second uh, account involved in this transaction is your महेश अकाउंट. महेश को अगर हमने बेटा पेमेंट करी है तो महेश हमारा क्रेडिटर होगा, है ना. महेश हमारा क्रेडिटर होगा. महेश इज अ पर्सनल अकाउंट. Mahesh is a personal account and Mahesh is the receiver of cash from the business. अगर business ने cash pay किया है महेश को तो Mahesh is the receiver of cash from the business. So we'll apply the rule of this natural personal account, that is debit the receiver. Debit the receiver, and this transaction is going to decrease the amount of creditor in our books of account. क्योंकि जब मैंने महेश को पे कर दिया 9600 तो महेश का अकाउंट 9600 से रिड्यूस हो गया, यानी कि डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर इन द बिजनेस. एंड महेश हमारा क्रेडिटर था. क्रेडिटर is a liability account according to modern approach. Now in this transaction one more account is opened, that is my discount received account. फाइन, डिस्काउंट भी तो रिसीव किया बिजनेस ने. जब टाइमली पेमेंट करी तो डिस्काउंट रिसीव 400 का बिजनेस ने रिसीव किया. सो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, it will be treated like our income, so classified according to traditional approach as a nominal account, and we'll apply the rule credit all incomes and gains as discount received is the income. Fine. And then this will result into increase in income, and according to the modern approach, discount received will be our income account. Now see, if I want to learn the rule of debit and credit according to modern approach, तो आप देखिए एसेट अकाउंट में क्रेडिट का मतलब डिक्रीज है, और जब हम जनरल एंट्रीज की पास करेंगे तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे. देन सेकंड, लाइबिलिटी अकाउंट में डेबिट का मतलब डिक्रीज है, और जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो महेश जो हमारी लाइबिलिटी थी क्रेडिटर, उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट करेंगे. एंड देन फाइनली डिस्काउंट रिसीव्ड अवर इनकम. इनकम अकाउंट में अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच क्रेडिट का मतलब इंक्रीज है, और जब हम एंट्री पास करेंगे जर्नल एंट्री तो डिस्काउंट रिसीव्ड को हम क्रेडिट करेंगे. So the entry which is recorded in our books of account will be Mahesh account debited to cash account to discount received account. Fine. अब कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 9600 से. ठीक है बेटा, 9600 से हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, हम कैश की पेमेंट कर रहे हैं. 400 से डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो रहा है 400 से. सो महेश का अकाउंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट हो जाएगा द सम टोटल ऑफ इट 10,000 से. 9600 प्लस 400 इज 10,000. सो 10,000 से महेश का अकाउंट डेबिट हो जाएगा. नाउ सी, we also know that sum of all the debits is equal to sum of all the credit. तो आप खुद ही देखिए महेश का अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 से, और कैश अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड का टोटल अगर हम करें तो ये दोनों अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं 9600 प्लस 400 विच इज इक्वल टू 10,000. अब बेटा इस एंट्री को हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री. दिस एंट्री इज नोन एज कंपाउंड एंट्री. अब तक हमने जितनी एंट्रीज पढ़ी थी उसमें एक अकाउंट डेबिट हो रहा था, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा था. फाइन. लेकिन हमने इस एंट्री में देखा कि वन अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड एंड टू अकाउंट्स आर क्रेडिटेड, लेकिन जो अमाउंट डेबिट क्रेडिट हुई है वो सेम है. महेश का अकाउंट डेबिट 10,000 से हुआ है, और कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट जो हुए हैं इनका जो सम टोटल आया है अमाउंट का वो 10,000 ही है. सो दैट इज व्हाई द एंट्री पास्ड इज करेक्ट, एंड दिस टाइप ऑफ एंट्री इज नोन एज compound entry, compound journal entry. Now next transaction, received cash from Arun rupees 4,900
and discount allowed to him rupees 100. Now see, in this transaction we have received cash from Arun. यानी कि अरुण हमारा डेटर होगा, तभी हमने उससे कैश रिसीव किया है. So the accounts involved here are cash account. It's a real account. Cash is being received, so debit what comes in as cash is coming inside the business. This transaction will result into increase in cash in the business, and your cash account is an asset account according to the modern approach. Then we have received cash from Arun. Arun is our debtor. डेटर होगा बेटा, तभी तो हम उससे कैश रिसीव कर रहे हैं, और नाम यहाँ पर आ गया है, तो अरुण इज अवर नेचुरल पर्सनल अकाउंट. नाउ अरुण इज द गिवर ऑफ कैश टू द बिजनेस. अरुण कैश दे रहा है बिजनेस को, तभी तो बिजनेस रिसीव कर रहा है. सो अरुण इज द गिवर ऑफ कैश टू द business. So the rule is credit the giver. We'll apply the rule according to traditional approach, credit the giver. This transaction will result into decrease in the amount of debtor in the business, and debtor account according to the modern approach is an asset account. Next, one more account is involved now in this transaction, that is discount allowed account. Now discount allowed account, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट. बेटा अगर अरुण से मैं 100 रुपीज कम रिसीव कर रही हूँ, सो इट इज ट्रीटेड जस्ट लाइक एज माई एक्सपेंस. मेरा खर्चा हो गया या मुझे नुकसान हो गया 100 रुपीज का, जो मैं और रिसीव कर सकती थी. बट डिस्काउंट अलाउड, देखो हम डिस्काउंट देते हैं अपने डेटर्स को. रीजन, या तो वो टाइमली पेमेंट दे देते हैं, या प्रॉम्प्ट पेमेंट दे देते हैं, या टाइम से पहले पेमेंट दे देते हैं. वी हैव लर्न दिस टर्म previously also in basic accounting terms. Discount allowed, it's a expense for the business. Why? Reason is that this cash discount is being offered to encourage the debtor to make timely payment. Fine. So since it's a nominal account, it's an expense account, the rule will be debit all expenses and losses. This account will be increased. It is actually going to result into increase in expenses, and according to modern approach it will be classified as expense account. So you can very well see that here, if I want to learn the rule of debit and credit according to modern approach, asset account mean debit का मतलब increase होता है, तो हमारी journal entry में cash account debit होगा. देन एसेट अकाउंट में क्रेडिट का मतलब डिक्रीज होता है, तो हमारी जर्नल एंट्री में अरुण जो कि डेटर है उसका अकाउंट क्रेडिट होगा. एंड देन एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट का मतलब इंक्रीज होता है, तो हमारी एंट्री में डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होगा. सो द एंट्री विच इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड will be cash account debited, discount allowed debited to Arun. Fine. Now see, अब हम अमाउंट फिल इन करते हैं. कैश रिसीव हुआ हमारे बिजनेस में 4,900. फाइन. कैश अकाउंट रिसीव्ड इज, just a sec, it is 4,900. Fine. Discount allowed is rupees 100. Discount allowed is rupees 100, and Arun's account will be credited by 5,000. यानी कि अरुण से हमें 5,000 अमाउंट रिसीव करनी थी, हमने 4,900 रिसीव करी, and 100 will be our discount allowed. Fine. So this entry is also an example of the compound journal entry where two accounts are debited and one account is credit, but the sum total of all the debits are equal to the sum total of the credit. I hope that now the rule of debit and credit which we apply to pass the journal entry in case of traditional approach, when we classify the accounts in according to traditional approach, and when we classify the accounts according to modern approach, it's being clear to all of you.
If we have understood this concept, then now we are in a position to pass the journal entries in our journal. So journal is our book of account. It's a primary book of account which is prepared for the first time to record the business transactions. So that's all for today from my side in this particular section. Hope you have enjoyed the learning. In the next session, we'll be starting with the preparation of journal in proper format. That's all for today. Thank you very much.